So, welcome back. Happy New Year to all. Okay, and today we will going to start a new chapter for New Year, new chapter, new concept. We will discuss in today's session. Okay, Kuldeep. So, welcome back. So, new chapter that is oscillation. That is oscillation. You know what is oscillation? Oscillation, art of periodic motion. That's good. Oscillation means to and fro motion of any object to its main position. This is simple pendulum let. This is the main position. This is the main position. When you displace this simple pendulum from its main position, it will move like this. First here, then again here, then in this way. So this is to and fro motion. To and fro motion of object called oscillation. So this one is mean position. This one is known as extreme position. Extreme position. Extreme position is means maximum displacement from the mean position. Maximum displacement from mean position, that is the extreme position, and maximum displacement from mean position is known as amplitude of oscillation. Is known as amplitude of oscillation. So what is amplitude? Amplitude. Maximum displacement. Maximum displacement from mean position. From mean position. Called amplitude. Called amplitude. क्या बोलेंगे बेटा इसको? एम्पलीट्यूड बोले. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑसिलेशन के अंदर, यू नो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी गिवन इंस्टेंट. एम्पलीट्यूड भी एक डिस्प्लेसमेंट ही है, पर जरूरी नहीं होगा हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे वो कहीं ऐसे भी तो हो सकता है. तो किसी गिवन इंस्टेंट पे जो पोजीशन है फ्रॉम द मेन पोजीशन, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. तो पोजीशन ऑफ object from mean position is known as displacement. So displacement may be positive, may be negative, may positive, negative and zero. Zero displacement means mean position. Zero displacement means mean position. This is the mean position. If it is given that displacement is zero, that means it is mean position. It is mean position. This is the displacement. This is the
डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? नाउ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। सो number of oscillation per second is called frequency. Number of oscillation per second called frequency. Per second कितने oscillation होंगे, that is known as the frequency. It is represented by f. किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको? f से। किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको? f से। या इसको n भी लिखते हैं या म्यू भी लिखते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? न्यू हो सकता है, एफ हो सकता है और एन हो सकता है। तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या होगी? हर्ट्ज होगी, जिसको हम लोग लिखते हैं एच जेड से। किससे लिखते हैं? एच जेड से। एक्चुअली इट इज आल्सो नोन एज सेकेंड इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? m0 l0 t-1. Next thing that is important thing, that is time period. What is the time period? You know? Time period. Time period. What is time period? Time required to complete one oscillation. Time required to complete one oscillation. Time required to complete one oscillation, that is known as the time period. This is represented by capital T. You know what is the relation between time period and frequency? Relation between time period and frequency. What is the relation between time period and frequency? T equal to 1 upon f or f equal to 1 upon t. 1 upon t. This is the time period and frequency relation. Now, some more definitions are like there. You know what is the angular frequency? Angular frequency. Angular frequency, or it is also known as angular velocity. Angular velocity or speed. It is represented by omega. किससे लिखते हैं इसको? ओमेगा से। क्या लिखते हैं? ओमेगा से। ठीक है। सो ओमेगा इक्वल टू, इफ एनी ऑब्जेक्ट oscillate, that means angular change per second. Angular change per second. So like this, if object move in a circular path, this is the complete angular change of 2 pi, and time period of this one is capital T. Then what is the omega? Distance upon time, 2 pi upon t. Total angular distance, that is 2 pi. Time required to complete oscillate one circular oscillation, that is capital T. So omega equal to 2 pi upon capital T. So omega equal to what? Reciprocal of T, that is f. So 2 pi f. Angular frequency omega equal to 2 pi f. Omega equal to also 2 pi upon T. 2 pi upon T.
Now, wavelength, you know what is the wavelength? Wavelength, that is lambda. This is very important. This will be very important in wave motion. In wave motion. So in wave motion, we will discuss about the wavelength. So here I am discussing because basic definition, all other definitions are related to this one in this chapter. So like this. This is the wave motion. This is the known as the trough. This is known as the crust and so distance between two conjugative trough or crust, that is known as the wavelength, lambda. Wavelength, lambda. So wavelength is distance between two conjugative trough or crust is known as wavelength. What is the SI unit of this one? SI unit, wavelength का SI unit मीटर. क्या होगी? मीटर. डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैसे मेजर होती है? मीटर में. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेज एंड फेज एंगल. Phase. What is the phase? Phase. Phase is a physical quantity which represents the angular position of the object. Angular position of the object in oscillation, in SHM, in wave motion. किसी में भी जो angular position को represent करता है, that is known as the phase or phase angle. So it is a physical quantity. Is a physical quantity which represent angular position of object in oscillation, comma SHM, simple harmonic motion, and in wave motion. In wave motion किसी के अंदर भी आपको एंगुलर पोजीशन निकालनी है. फॉर दैट यू रिक्वायर्ड फेज और फेज एंगल. फेज और फेज एंगल. ऐसा यूनिट ऑफ फेज और फेज एंगल, दैट इज रेडियन. दैट इज रेडियन. ऐसा यूनिट ऑफ फेज और फेज एंगल. फेज एंगल इज रेडियन. ऐसा यूनिट क्या होगी? फेज एंगल की क्या होगी? रेडियन होगी. क्या होगी? रेडियन होगी. समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं इसके अंदर कि फेज क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है. जो एंगुलर पोजीशन को बताता है, दैट इज फेज और फेज एंगल. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिमेनिंग, के one more thing that we will discuss here. This is also part of the wave. This is also part of the wave, but we will not discuss in that chapter, wave chapter. ये definition, एक आध definition पीछे बताने कोई फायदा नहीं है. So that's why we are discussing in this chapter here only. So next thing is propagation constant. Propagation constant. Propagation constant, that is known as the K. Known as K. So propagation constant is phase difference of two vibrating particle propagate at unit distance. Propagate at a unit distance. So phase difference between two vibrating particle. Vibrating particle
at unit distance. So propagation constant k equal to 2 pi upon lambda. 2 pi upon lambda. Lambda is distance and phase 2 pi. You know, in wave motion, when we observe like this, like this. So in this one and this one, here is the phase difference for the sinusoidal wave, that is 2 pi. Total distance, that is lambda. So what is the phase difference for the unit distance? Total phase 2 pi upon lambda. 2 pi upon lambda. So this is the propagation constant. This is the propagation constant. So this is all about definition related to the some wave motion, oscillatory motion. What is the oscillatory motion? That we already discussed. Now we will discuss about what is the periodic motion and non-periodic motion. You know what is the periodic motion? Periodic motion. Periodic motion. So motion of the any particle or anything which repeat after same interval of the time. ऐसा मोशन जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम चीज क्या होती है, रिपीट होती है, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन. जैसे अपन बात करें, एक सिंपल अगर बात करते हैं, इस टाइप का साइनोसॉइडल मोशन है, ये वाला देखो, ये वेव बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है. तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दिस इज ए पीरियोडिक मोशन. ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है. तो मोशन इन विच same characteristics of object repeats after fixed interval of time known as periodic motion. So this fixed interval of time is known as time period. Fixed interval of time is known as time period. क्या बोलेंगे बेटा उसको, टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. समझ में आ गई चीज, क्या बोलेंगे इसको, टाइम पीरियड. सो हियर लेट अ फंक्शन f(x). दिस फंक्शन विल रिपीट आफ्टर टाइम t. सो दिस इज इक्वल टू x प्लस टी. सेम वे x प्लस 2t. सेम टाइम के बाद सेम चीज क्या होगी, वापिस से रिपीट होगी. सो x ऑफ एन टी. सेम इंटरवल के बाद ये फंक्शन क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट होता है. जैसे अपन लिखते हैं ना, साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज आल्सो साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज आल्सो साइन थीटा. सो सेम थिंग इज रिपीट्स और नॉट. दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ द साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन फंक्शन, दैट इज 2 पाई. साइन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई का पीरियड होता है. कितना होता है पीरियड, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, क्योंकि कॉस और साइन दोनों फंक्शन जो है वो 2 पाई के बाद क्या होता है, वापस से बार बार रिपीट होते हैं. इसी तरह टेन का देखोगे, वो पाई के बाद रिपीट होता है. तो टेन का पीरियड कितना है, पाई का होता है. कितना होता है, पाई का होता है. नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन motion which not repeats itself after same interval of time. Motion in which same characteristics of motion not repeats fixed interval of time.
interval of time, that is known as non-periodic motion. That means in this one fx not equal to f of x plus t. ऐसे t जैसी चीज में कोई अवेलेबल ही नहीं होगी, t जैसी चीज कोई अवेलेबल ही नहीं होगी. अब पीरियोडिक मोशन की बात करें तो कौन सा मोशन पीरियोडिक होता है? मोशन ऑफ द अर्थ इज पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक? अर्थ का मोशन क्या होता है? पीरियोडिक होता है. मोशन ऑफ पेंडुलम पीरियोडिक, मोशन ऑफ पेंडुलम periodic. Now tell me, every periodic motion is a oscillatory motion? No. But every oscillatory motion is a periodic. In oscillation, सेम चीज वापस सेम टाइम के बाद आती नहीं आती है? जैसे एक पेंडुलम था, इसको आपने यहाँ से ला के यहाँ पे कर दिया, तब वो इधर जाएगा इधर जाएगा, तो सेम टाइम के बाद वापस यहाँ पे आएगा, फिर थोड़े उसी टाइम इंटरवल के बाद वापस यहाँ से जाके यहाँ पर आएगा. तो उसको टाइम क्या लगता है? सेम लगता है. क्या लगता है? सेम. एक चीज को पूरा करने के लिए बार बार वो चीज रिपीट होती है. तो ऑसिलेशन क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है. बट हर एक पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है. जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्स पे रोटेट कर रही है, वो पूरा ऐसे घूम रही है, वो ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, वो ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, बट वो क्या है? पीरियोडिक है. बट वो क्या है? पीरियोडिक है. समझ में आई बात? कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक होना जरूरी है, बट हर एक पीरियोडिक का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है. तो आप क्या लिखोगे कि ईच ऑसिलेटरी मोशन, ईच oscillatory motion is periodic, but each periodic motion is not oscillatory. समझ में आ गई बात? और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी. समझ में आ गई बात यहाँ तक? So what is the periodic motion, what is the non-periodic motion, what is the oscillatory motion, and what are the important terms related to the oscillation? Time period, frequency, angular speed, angular velocity or angular frequency, time period, ठीक है? Displacement, amplitude, phase angle, SI unit of all these, frequency, relation between frequency and time period. That all we discuss up to here. Next topic, that is SHM. Very important topic. Actually, this chapter is starting now. This chapter is starting now. These are the all basic introductory part. Okay. So now we will start actual chapter from here. That is the SHM. SHM. What is SHM? You know what is SHM? Simple harmonic motion. नाम तो सिंपल है, काम कॉम्प्लेक्स है. सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा, पता है? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज ए मोशन. व्हाई इट इज नोन एज द हार्मोनिक मोशन? हार्मोनिक मोशन मीन्स पीरियोडिक मोशन. इट इज ए periodic motion. Same kind of properties will be repeat after same interval of the time. Why it is called SHM? Is periodic motion is SHM? No. It is a part of periodic motion. SHM is a part of periodic motion. So SHM by definition, when we calculate mathematically for the any object position, it is the projection of position of any object. Projection of position of any object on vertical axis. On a vertical axis. Mathematically, when we discuss about the SHM, projection of motion of particle, motion of particle on vertical axis, on vertical axis.
किस पे लेना बेटा प्रोजेक्शन? वर्टिकल एक्सिस जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज नोन एज द SHM. So like let we have a object that move in a circular path. So we can easily find the equation of displacement for the SHM. In this way, a object move in a circular path like this. Okay. So here, this one is t equal to 0, t equal to 0, t equal to t by 4, t equal to t by 2 here, or here t equal to 3t by 4 and here t equal to वापस से एक कंप्लीट टाइम इंटरवल के बाद क्या हो गया? सेम चीज रिपीट हो गई. दैट मीन्स इट इज ए periodic motion. It is a periodic motion. Let after some time interval of t, object is here. After some time interval, object is here. So it is amplitude of the object, that is A, amplitude of displacement, that is A. Now what is this angular position theta? If speed is omega, angular speed is omega, you know what is the angular distance? Theta equal to omega into t. Distance equal to speed into time. Distance equal to speed into time. So theta equal to omega into t. Now we have to take the projection of this one on vertical axis. That means we required value on this axis. On which axis? On vertical axis. This is the horizontal axis. This is the vertical axis. So projection of this position on the vertical axis on the y axis. So you know this component of the motion y equal to a cos theta. And what is this one? y equal to a, wait a minute, y equal to a sin theta. So this is the SHM. This is the, by definition, what is SHM? Projection on vertical axis. So projection on vertical axis of position of object, that is equal to a sin theta. So y equal to a sin theta. Sin theta, or theta equal to what? A sin omega t. Sin omega t. So here in this equation, y equal to displacement. Y represent displacement. A represent amplitude. A represent amplitude. And omega t represent phase. Omega t represent phase of SHM. In this one, we have initial phase 0. Sometimes this equation is writing like this. It is t equal to 0. हमने पोजिशन 0 ली है. अगर पोजिशन 0 नहीं हो, मान लीजिए कुछ एंगुलर पोजिशन इस टाइम पे हो t equal to 0 पे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इनिशियल फेज लेना पड़ता है फाई नॉट. क्या लेना पड़ता है? फाई नॉट. तो वो हमारे पास जब लेंगे तो y की इक्वेशन जो लिखते हैं a sin omega t plus phi naught. So this phi naught is initial phase. Phi naught is nothing but initial phase. Initial phase. Okay, ये क्या है आपका initial phase. So we will discuss a one very small question on this one. So that will clarify the things. I think up to here everything is clear to everyone. Okay, so we will take one question of this concept. Let y equal to 20 sin 100 pi t plus 100 pi t plus pi by 3 plus pi by 3. Now if they want amplitude, what is the amplitude of this one? So we will compare with y equal to a sin omega t plus phi naught. So when we compare, what is the initial phase? Tell me first. Phi naught equal to pi by 3. Pi by 3. This is initial phase. This is initial phase. This is initial phase. Okay. And what is omega? By comparison, these two equations. This is 100 pi. This is omega. So omega equal to 100 pi. Now if we want to find time period and f, you know what is the omega equal to 2 pi f? Omega equal to 2 pi f. So 2 pi f equal to 100 pi. So now tell me what is the f? F equal to 50 hertz. F equal to
50 hertz. Now, if we want to find, we find phi naught f t. What is the t? T equal to 1 upon f. So t equal to 1 upon 50. So can I write it is like this, 1000 upon 50 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 second. So what is the answer? 52 ja? It is 20 millisecond. 20 millisecond is the टाइम पीरियड. 10 पावर माइनस 3 क्यों किया? 10 पावर माइनस 3 और 1000 वापस से क्या हो गया? 1 ही हो गया, और 1 ही था ऊपर हमारे पास, ये आ गया हमारे पास. अब और क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसमें बेटा बताओ? यही चीज मेनली यही चाहिए. अब आपको पूछ ले कि एट टी इक्वल टू 1 अपॉन 100 सेकेंड, what is displacement? What is displacement? What is displacement and what is t equal, ये भी पूछ सकता है 1 अपॉन 200 सेकेंड में भी कितना होगा, दोनों पे निकाल सकते हैं हम लोग, वैल्यू डाल देंगे. y इक्वल टू क्या है? 20 साइन 100 पाई, और t की जगह डालेंगे एक बार 1 अपॉन 100 प्लस पाई बाय 3. नाउ टेल मी, 100 to 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 20 साइन पाई प्लस पाई बाय 3. नाउ टेल मी व्हाट इज द पाई प्लस पाई बाय 3? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव. तो क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस 20 साइन पाई बाय 3. साइन पाई बाय 3 मीन्स 180 प्लस थीटा साइन थीटा रहता है. अब 180 प्लस थीटा, ये तो माइनस में आ गया. पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है साइन के अंदर? 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब क्या हुआ? √3/2. कितना हुआ? √3/2. तो माइनस 20 इंटू √3/2. What is the displacement? Minus 10 √3 meter. Minus 10 √3. One part is also remaining here, that is t equal to 1 upon 200 पे कितना होगा? So at t equal to 1 upon 200. So y equal to 20 sin 100 pi into 1 upon 200 plus pi by 3. So what is the answer here? This is pi by 2. Y equal to 20 sine pi by 2 plus pi by 3. You know sine 90 plus theta, that is cos theta. In second quadrant sine is positive. So 20 cos pi by 3. What is cos pi by 3? Can you tell me? 1 upon 2. So 1 upon 2, that is 10 meter. 1 upon 200 second displacement, 1 upon, sorry, simply 10 meter. So this is all about basic introductory part of the SHM. SHM is nothing but projection on vertical axis. Projection on vertical axis. ठीक है, समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत है? तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्प्रिंग पार्ट, what type of oscillations are there, that we will discuss in next lecture. So that's all for this very first session of 2024. Wish you all the best for this year. Okay, so thank you everyone. See you in next class.